क्वेश्चन पेपर कर रहे थे 2021 एंड 22 का। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम पार्ट बी में चलना है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कर लेते हैं। सॉल्यूशन, let lambda be the eigen value of a, then the characteristic equation of matrix A is क्या होती है भाई, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a आई इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट। इसको निकाल लीजिए। नंबर फर्स्ट ट्रेस ऑफ a, that is sum of the diagonal element, right. -2 1 0 -2 plus 1 plus 0, that is -1. Now number second, sum of determinant of aii. What is aii? That is determinant of a11 plus determinant of a22 plus determinant of a33, right. Therefore hiding by a11, determinant hiding by a22 and determinant and hiding by a33, determinant. Now hiding 1 1, that is 1 minus 6 minus 2 0, that is 1 minus 6 minus 2 and 0. Now hiding 2 2, that is hide this and this, minus 2 minus 3 minus 2 minus 3, hiding this and this, then minus 2 and minus 3 minus 1 and 0, minus 1 and 0, right. Now hiding by 3 3 this row and this column, right. That is minus 2 2 minus 2 2 2 and 1, right. Minus 2 2 and 2 1. Now finding the elements, that is 0 minus 12, that is 6 into 2 is 12 with negative sign, plus 0 minus 3 and minus 2 minus 4, therefore minus 12 minus 3 minus 2 and minus 4, therefore 12 14, and that is minus 21. And last one is number third, that is determinant of the matrix A. Therefore determinant of matrix A given minus 2 2 minus 3 minus 2 2 minus 3 2 1 minus 6 2 1 minus 6 and minus 1 minus 2 0. Therefore minus 2 into 0 minus 12 minus 2 into minus 2 into 0 minus 6 and minus 3 into this, that is minus 4 plus 1. This implies 24 plus 12 and minus 3 and minus 3, that is 9. Therefore this will be 12 and 20 36 or 9, that is 45. Thus the characteristic equation of
the matrix A is what? Lambda cube minus trace of A lambda square minus plus sum of determinant of ai into lambda minus determinant of A is equal to 0. Therefore, the characteristic equation will be lambda cube minus trace of this is negative 1. So this is minus 1 lambda square plus this is negative of 21 into lambda minus determinant of this is equal to 45 is equal to 0. Therefore, lambda cube plus lambda square minus 21 lambda minus 45 is equal to 0. Right? चलिए solving by calculator. Solve by calculator. Lambda 1 is equal to minus 3, lambda 2 is equal to minus 3 and lambda 3 is equal to plus 5. Now find number first. Let V1 be the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda 1 is equal to minus 3 or V24 lambda 2 is equal to minus 3. Therefore A minus lambda 1 I into x is equal to 0. That is A plus 3I into x is equal to 0. Now what is A? What is A? Since A is equal to, what is A? A is minus 2, 2 and minus 3. Minus 2, 2 and minus 3 and 2, 1, minus 6, minus 1, minus 1, 0. Therefore, adding plus 3 in each diagonal element of the matrix, that is 0, 0 and 0, right? That is minus 2 plus 3, that is plus of 1, right? Adding 3, that is 4, adding 3, that is 3 and remaining element are rest, that is minus 6, 2, minus 1 and minus 2. अब आपको पता होगा दो मैट्रिक्स दो आइगन वैल्यू है लेकिन दोनों सेम है, यानी कि ये आइगन वैल्यू दो बार लिखी है, तो इस मैट्रिक्स में दो रो को क्या बनना पड़ेगा? 0 बनना पड़ेगा, राइट? चलिए रो रिडक्शन लगाते हैं इसमें। पहले क्या करेंगे आप? R2 इज रिप्लेस बाय R2 minus 2 R1 और अगला करेंगे R3 इज रिप्लेस बाय R3 plus R1. So you get that is x1, x2 and x3, that is 0, 0 and 0. Now 1, 2, minus 3, 2 multiply 0, 2 multiply 0, 2 multiply 0, adding 0, 0 and 0. Therefore you will get x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 0. Since equation is equal to 1 and variable कितने हैं भाई? Then the number of free variables
नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे? Number of free variables is equal to 3 minus 1 is equal to 2. So let x3 is equal to k1 and x2 is equal to k2. Right? ये हमने फ्री वेरिएबल कंसीडर कर लिया. Right? Next, putting the value in the equation. Therefore, x1 plus 2, इसको k2 लिख लो, इसको k1 लिख लो, तो अच्छा लगेगा. k1 minus 3 into k2 is equal to 0. That is x1 is equal to minus 2 k1 plus 3 k2. राइट, ये आपकी सारी वैल्यूज है. thus x is equal to x1, x2 and x3. Therefore, what is x1? x1 is minus 2 k1 minus plus 3 k2. That is k1 and that is k2. राइट, इसको आप ओपनली लिख लीजिए. that is minus 2 k1 1 k1 and 0 k1 plus and plus 3 k2 0 k2 and 1 into k2. Right, it can be taken as x is equal to, that is k1 and next that is k2. Right, this is minus 2 1 0 3 0 and 1. Hence v1 is equal to minus 2 1 0 and v2 is equal to 3 0 and 1. Now next, number 7, let v3 be the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda 3 is equal to 5. Then a minus lambda 3 I into x is equal to 0. So that is a minus 5I into x is equal to 0. Now what is a? Since a is equal to, ये आपकी क्या मैट्रिक्स है? minus 2 2 and minus 3 2 1 and minus 6 and minus 1 minus 2 and 0. So you get a plus 5 into x1, x2 and x3. That is 0 0 and 0. Right, now adding plus 5 and plus 5, sorry, negative 5, that is negative of 7 2 minus 3 2, that is minus of 4 minus of 6 minus 1 minus 2 and minus 5. Right, now applying the road action, you see this is 1. So interchanging the rows first and third, row 1 is replaced by row 3. राइट, जैसे ही आपने रो 1 रो 3 रिप्लेस कर दिया तो आपको रो रिडक्शन में थोड़ा आसान हो जाएगा. राइट, देखिए x जो आपकी आइगन वैल्यू है कितनी बार लिखी हुई है? इसमें एक बार लिखी हुई है, तो इसका एक रो तो पक्का 0 होगा. राइट, देखिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 7 2 एंड माइनस 3. अब इसमें आप लोग क्या करेंगे? रो रिडक्शन लगा लीजिए. रो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे आप? R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस 2
R1 and R3 will replace by R3 minus 7 into R1। ये आप कर दीजिए, ये करने से आप लोगों को रो रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक दैट इज x1 x2 एंड x3 दैट इज 0 0 and 0, therefore minus 1 minus 2 and minus 5 multiplying 2 and adding, that is 0 2 2 is 4, 4 and 4 that is minus 8, 5 3 the 5 to the 10 and 6 minus of 16, that is minus 7 0 minus 7 14 and negative that is 2 7 to the 14 14 or plus 16, that is 5 5 7 35 35 minus 6 that is 32, right। चलिए और इसमें रिएक्शन क्या कर लेते हैं, R1 को रिप्लेस कर दो नेगेटिव इंटू R1, R2 को रिप्लेस कर दो नेगेटिव 1/8 इंटू R2 एंड R3 को रिप्लेस कर दीजिए 1/16 इंटू R3। जैसे आप ये करेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज x1 x2 एंड x3, 1 2 3 0, राइट, दैट इज पॉजिटिव 1, इसको हटा देते हैं, कितना बन गया पॉजिटिव बन गया, तो 1 2 एंड 5 दैट इज 0 1 2 0 1 2 and so using R3 is replaced by R3 minus R1, R3 minus R2, sorry, that is अब क्या बन जाएगा 1 2 5 0 1 2 0 0 0, that is x1 x2 x3 and is equal to 0 0 and 0। अब चलिए देख लेते हैं एक रो एक नंबर 5 आपके सामने एक बार लिखवा था, एक रो 0 है, x1 plus 2 x2 plus 5 x3 is equal to 0, that is called first, and x2, did you see we are exchanging the rows, right, हमने एक्सचेंज किया था रो 1 और रो 3, तो ये आपको बन जाएगा x1 और ये x3, इसको जरूर ध्यान रखेंगे भाई, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा आपका x1 और ये बन जाएगा x3। तो आपने क्या किया था रो 1 और रो 3, दैट इज ये बन गया था x3, ये बन गया था x1 और x1, राइट, x3 x1 x3 x1, so that is x3 and that is x1, तो ये बन गया आपका x2 प्लस x1 2x1, राइट, दैट इज 2। अब देखिए नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है भाई, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स, that is 3 minus 2 is equal to 1, so let x1 is equal to k3 be a constant, right, ये आपने constant consider कर लिया, then from second x2 is equal to minus of 2 k3, now from equation number first, तो first क्या कहता है भाई x3 minus 2x2 that is 2 into minus 2 into k3 plus 5 into k3, right, यहाँ वो कितना बन गया x3 minus 4 k3 plus 5 into k3 is equal to 0, that is x3 is equal to k3, right, with negative sign, plus x is equal to
x1, x2 and x3 is equal to what is x1? x1 is k3, that is x2 minus 2 of k3, that is minus of k3. It can be taken as 1 minus 2 minus 1 k3, and so the eigenvector corresponding 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 lambda 3 is equal to 5 is v3, that is 1 minus 2 and minus 1. चलिए फाइनली आप लिख लीजिए. Finally we get the eigenvectors corresponding to the eigenvalues lambda 1 is equal to, छोड़िए eigenvalues लिख लीजिए. lambda 1 is equal to -3, lambda 2 is equal to -3 and lambda 3 is equal to 5 are v1 is equal to and v2 is equal to and v3 is equal to, right, respectively. रेस्पेक्टिवली जरूर लिखना चाहिए. इससे आपको पता लगेगा सेकंड नंबर पे जो आइगन वेक्टर है वो सेकंड का है. -210 क्या क्या है भाई? -210 and last is -1 -2 and -1 and second last. What is second last? Second last में यही लिखा होगा, that is 301 301 301. यही आपका फाइनल आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.